ट्रांजिस्टर्स हो गए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, आईसी चिप थर्ड जनरेशन की है, एंड फोर्थ जनरेशन का है। So first generation punch card was used for input, magnetic tape for storage, speed के लिए milliseconds में होती थी, and machine language for the machine language use होती थी जो भी binary है, and IBM 650, ENIAC, UNIVAC, etc. ये सब है इसके। इसके assembly language है। ये किसने बनाई? By David J. Okay, no. और Grace Hooper. Next, IBM 1404, NCR 304. So magnetic tape and magnetic disc was used. Second generation computer के examples हैं IBM 1401, CTC 3600 and Honeywell 400. Third generation integrated circuit made by J.S. Kibley. Okay, IC chip was made by Kibley and Robert Noy. So magnetic core technology यूज होती है थर्ड जनरेशन में, स्पीड नैनो सेकेंड्स के अंदर आ गई, हाई लेवल लैंग्वेज वाज यूज्ड लाइक फोर्ट्रन एंड कोबोल, एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का सेपरेशन हुआ थर्ड जनरेशन के अंदर, रैम का यूज स्टार्ट हुआ, large scale integration technology was introduced, Fortran and COBOL language. The first high level language was Fortran, that is formula translation, developed in 1957 by John Backus. He used a third generation and now used by scientists, and COBOL is a common business oriented language. 1959 में ग्रेस मोरे हुपर के द्वारा ये बनाई and used as high level language in third generation common business oriented language है ये। फिर hackers use Unix operating system. First microprocessor by Intel was Intel 4004. Fourth generation देखते हैं। So microprocessor use होता था semiconductor for storage and Winchester disk and very large scale integration हुआ fourth generation के अंदर। GUI that is graphical user interface by Xerox कंपनी में सबसे पहले Microsoft कंपनी में लाया गया था graphical user interface, उसके बाद में एप्पल में आया। So India's first microprocessor was Shakti. EFT stands for electronic fund transfer.
and Pentium 1, 2, 3, and 4, and dual core fourth generation. Okay, so common business oriented language for me थी जॉन बैकर्स ने एंड कॉबोल दी थी ग्रेश मोरे होपर ने. Now fourth generation में graphical user interface. So graphical user interface. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया है Xerox कंपनी ने. जो कि इनने फोर्थ जनरेशन में देखा और अल्ट्रा लार्ज स्केल आया था फिफ्थ जनरेशन के अंदर. फिर मर्करी लैंग्वेज. मर्करी लैंग्वेज किसने दी है? ज़ोल्टन सामोगई ने. जो यूज होती है फिफ्थ जनरेशन में. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई और Mercury element was used in the first generation, but Mercury language was used in the fifth generation. Types of computer is analog, digital, and hybrid on the basis of work. So analog में ये हो गया physical units जो measure करता है, digital के अंदर personal computers, hybrid के अंदर analog plus digital. On the basis of size, microcomputer, mini computer, mainframe computer, and a supercomputer. Mainframe computer big size है, Univac था. सुपर कंप्यूटर लार्ज स्केल लाइक परम सिद्धि है, ये प्रत्युष मिहिर सहस्रात आदित्य परम 800 मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग है सुपर कंप्यूटर के अंदर. स्पीड मेजर करी जाती है फ्लॉप्स के अंदर. एंड मल्टी यूजर है यूज्ड बाय साइंटिस्ट वेदर साइंटिस्ट इसरो नासा. 1 petaflop equals to 10 raised to power 15 flops, and first supercomputer was CDC, that is Cray 1 computer. Father of supercomputer. Okay, you have to mention it here. So father of supercomputer है Seymour Cray. शिकागो में हुआ था फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का परम 8000 in 1999 by CTEC कंपनी. एंड इसके सीईओ थे विजय भटनागर. फर्स्ट फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया. अनुपम सुपर कंप्यूटर बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर फ्लेवर्स और भी है नेशनल एरोनॉटिक्स लैब का. एंड योर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर टिल नाउ इज प्रत्युष एंड मिहिर इन नोएडा. सेकंड फास्टेस्ट इज परम सिद्धि एआई. फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल इन इंडिया कहाँ पे हुआ था? कैलकटा के अंदर. इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकटा में फर्स्ट इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर था सिद्धार्थ. माइक्रो कंप्यूटर 1970s में डेवलप हुए हैं लाइक लैपटॉप वाज इन्वेंटेड बाय एडम ऑसबॉर्न. So we have to mention laptop Adam. Mini computer
The mainframe computer. More than one processors are used in mini computers. First mini computer was PDP 8000. So डेस्कटॉप पब्लिशिंग टूल वाले कार्यों में हम मिनी कंप्यूटर यूज़ करते हैं. Embedded computer one special program चलाने के लिए workstation to store the data and graphics. For blueprints, bridge. First mechanical computer by Gottfried Wilhelm Leibniz. Computer compute was leading word computer and large scale integration network. First commercial computer by Valentin Markman. International Computer Cyber Security Day celebrated on 30 November. नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ अक्टूबर में चलाया जाता है. फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ. फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था 1991. सो कीबोर्ड जो डिवाइसेस हैं इसके अंदर कीबोर्ड हो गया. ये बनाया था क्रिस्टोफर राथम शॉल्स ने. 4 पार्ट्स में है. टोरन है नॉट इम्पोर्टेंट. माउस. माउस बनाया था डगलस एंजलवर्थ ने. And it to work only on graphical user-based operating system. Mechanical mouse, optical, wireless, scanner. रे कुर्जविल ने कब बनाया था 1957 में. And trackball by Tom Cranston and Fred Longstaff in 1952. Joystick जॉर्ज ने 1910 में. लाइट पेन 1959. OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये बनाए हैं रे कुर्जविल 1970 में. ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है OCR. फिर माइक्रोफोन. माइक्रोफोन बनाया ML बारलाइनर ने 1870. बारकोड रीडर दो ने बनाया था ये. जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर कब है 1951 में. MICR by Stanford
Research Institute, USA का 1950 में, and MICR is Magnetic Ink Character. Magnetic Ink Character Recognition. ये तो हो गए इनपुट डिवाइसेस. अब देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस. सो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर स्पीकर हो गया. स्पीकर बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने स्पीकर इन्वेंट किया था. एंड हेडफोन बाय नाथानिएल बोल्डविन. प्रोजेक्टर किसने किया था? लियोन बॉली ने. एंड प्लॉटर बाय रेमिंगटन रैम. 1953 में स्पीकर. मुझे मत आओ बार बार ना लो. फिर एक तो है मैन्युफैक्चरिंग. ओह शिट. माइटर में है. कैथोड light emitting diode and liquid crystal. So जो CRT था ये कलर है दोनों. एक तो Julius Plucker and John Wilhelm. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है एक है लाइन प्रिंटर. एक है डेजी व्हील. फिर है ड्रम एंड चेन प्रिंटर. अब जो
Non-impact printer. These are inkjet, laser, thermal, and electrostatic. Laser की full form is light amplification by the stimulated emission of radiation. That's it covers. Next is memory of computer. So memory of computer primary memory and secondary memory है and प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम है रोम के अंदर बायो स्टोर होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रैम है और रोम है रैम स्टैटिक एंड डायनामिक है एंड रोम ओके जो रैम है दिस इज द मेन मेमोरी the speed of computer
सो मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल, मैग्नेटिक है, इसमें आ गया फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। और ऑप्टिकल के अंदर आ गया BRD, CD, DVD। So magnetic so ROM is permanent memory and BIOS stored in ROM. And so speed of memory, speed of computer depend upon register, cache, RAM, and the CPU. So register, cache, RAM, ROM, SD, and HDD. RAM static है और dynamic RAM है। static में fixed, static means fixed and refresh rate less होता है, इसके अंदर flip flop that is stored one bit of data and it is expensive, while जो dynamic RAM है it holds more bit of storage in single integrated circuit but बार बार refresh करना पड़ता है तो slow than static and data stored in transistor and capacitors. मेमोरी में टेम्परेरी स्टोरेज परमानेंट है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कुछ डायनामिक के टाइप है और सिंक्रोनस टाइम लाइक मेमोरी फ्रॉम रैम रोम कैश में। ओके, प्राइमरी के तो ये हो गए रैम, रोम, रजिस्टर और कैश। इसके अंदर रैम है, रोम है, सो जो रजिस्टर कैश रैम है ये वोलेटाइल कैश में हो सकता है तो टेम्परेरी मेमोरी वोलेटाइल कंपोनेंट स्पीड वाइज programmable, erasable, programmable and electrically erasable programmable read only memory not used because erase सारा motherboard निकालना पड़ता था and pen drive secondary auxiliary memory sequential access sequential access मैग्नेटिक टेप हो गई से डायरेक्ट एक्सेस वाली जो है उसमें मैग्नेटिक के अंदर फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क होगी
Okay. Operating system is stored in hard disk. And ये सी करना ब्लूटूथ डिस्क में लेजर बीम यूज होती है ना एलसीडी रोम से रिकॉर्डेबल राइटेबल डीवीडी electronic storage devices. American Standard Code for Information Interchange. Virtual memory. Now let's talk about कंप्यूटर नेटवर्किंग. सो गाइडेड मीडिया हो गया एक अनगाइडेड. सो गाइडेड मीडिया में आएगा ट्विस्ट पेयर, फाइबर ऑप्टिकल केबल एंड कॉक्सियल केबल्स. अनगाइडेड में रेडियो वेव्स, माइक्रो ट्रांसमिशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंफ्रावेव ट्रांसमिशन. सो नेटवर्क के डिवाइसेस कौन से हैं? दीज आर रिपीटर, हब, gateway, switch, router, bridge, and modem. So network devices are repeater हो गया, network से कनेक्ट में repeater चाहिए, hub, gateway, switch, router, bridge and modem. OSI model. So open system interconnection इसका मॉडल है. फिजिकल लेयर सबसे नीचे है, फिर डेटा लिंक लेयर, स्विच लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर. सो हम कनेक्ट करते हैं एप्लीकेशन लेयर से, जिसके अंदर सिंपल मेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज है, प्रेजेंटेशन, GIF, HTTPS, सॉकेट सिक्योर लेयर, रिपीटर. वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर. सो वर्क ऑन फिजिकल लेयर जिसमें लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है. अब ये क्या है? हाफ डुप्लेक्स ट्रांजिशन मॉडल to connect many computers together. Switch में full duplex model है to connect many computers together. स्विच के अंदर खुद की मेमोरी होती है एंड हब के अंदर नहीं होता. इट्स कॉल्ड डम टर्मिनल. हाइलाइटर. गेटवे. गेटवे में नेटवर्क बनाता है.
which using data link layer, physical layer, transport layer, and network layer. It connects all devices, transmission model, how simplex. Simplex में one way data transfer, one way limit, one way one time, and full duplex में one time multiple. Router used in wide area network. From round which it joins small networks, router with some data link layer of OSI modem, that is modulator and demodulator is analog, so digital signal से analog signal is modulation. So इंटरनेट एक इंस्टीट्यूशन के अंदर अंदर वाला लाइक वाईफाई का एक्स्ट्रानेट है बाहर में एंड ईथरनेट वायर से कनेक्टेड है. बस रिंग स्टार ट्रांसमिशन गाइडेड में के अंदर कोएक्सियल टेबल आ गई जिससे ट्रांसफर ऑफ डेटा पर सेकंड एंड ऑप्टिकल फाइबर्स माइक्रोवेव communication satellites and radio waves and three or more devices share a link in multi-point connection overlay network of another network. A list of protocols used by a system. One protocol is called protocol stack. Communication channel is shared by all machines in the network and broadcast system.